Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Equity benchmarks continue the winning rally amid mixed global cues. Sensex closes at 41,893. Nifty settles at 12,264. Rupee appreciates 19 paise against the US dollar. And gold surges 791 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज भी लिवाली। सेंसेक्स 41,893 पर हुआ बंद। निफ्टी 12,264 हुआ दर्ज। $1 की तुलना में रुपया 19 पैसे मजबूत हुआ और दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 791 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा। घरेलू शेयर बाजार में दिवाली से पहले लिवाली का सिलसिला लगातार जारी है और रौनक बाजार की लगातार निखरती चली जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 553 अंक यानी 1.34% की बढ़त लेकर 41,893 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 143 अंक यानी 1.18% बढ़कर 12,264 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार पर ध्यान दें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी आज तेज रही है, हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में थोड़ा सा कम। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.36% ऊपर उठकर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.54% की वृद्धि हुई। Equity benchmarks today continued their winning rally and gained more than 1% amid mixed global cues. The BSE 30 share index Sensex gained 553 points, 1.34% to settle at 41,893. The NSE Nifty 50 index also rose 143 points, 1.18% to settle at 12,264. The broader market at the BSE also climbed but underperformed the Sensex. The BSE Mid Cap Index rose 0.36% and the BSE Small Cap Index appreciated 0.54%. In the Sensex pack, shares of 21 companies climbed while 9 logged losses. Reliance zoomed 4.9%, Bajaj Financial Services Limited jumped 3.77%, IndusInd Bank gained for 3.4% and HDFC gained 3%. On the other hand, Maruti lost 2.7%. Bharti Airtel declined 1.7%, while Asian Paints and Ultratech Cement both fell 1.3%. In sectoral indices, 15 out of 19 sectors appreciated. The overall breadth of the BSE trade was positive as 1,477 shares climbed, 1,148 shares climbed, and 194 shares remained unchanged. Puneet, a warm welcome to you on Market Mantra. I hope you can hear us. Yes, sure. Thanks, Arjun. Puneet, do explain for the benefit of our listeners the reason behind the market rally that we are seeing. The market in today's trade went up by 553 points, but this is also in the background of the FII buying into the market for the month of October, and now they are also the net purchasers of equity for the month of November as well. We have data for the 5th of November. Today, of course, the data is provisional. So what is really driving their buying at this stage? Because they tend to be sellers at the fag end of the calendar year. Why is it that they are showing so much buying interest and the market has become bullish as a result? So, Arjun, clearly this has been a very extraordinary week as far as markets are concerned, and nobody really expected markets to perform the way they are performing, not only in India, but globally, even in the US. If you look at the US events, the elections there, the outcome is still contested. It's not clear how
how soon there will be a stable government, a stable new presidency in place. In spite of all this uncertainty, we find that the stock markets in US really have been shooting up, led largely by technology stocks, but across the board you see buying in most heavyweights. And if you look at the Nifty this week in India, Nifty has gone up by almost 600 points in this week. Sensex has risen by almost 2,800 points, and Bank Nifty has gone up by about 3,000 plus points. So clearly, nobody could have anticipated this kind of a rise at the beginning of this week. One of the possible reasons, we all anticipated that US election outcome may not be clear immediately, and there may be some kind of a dispute about the outcome, which is what is playing out. Yet, we expected markets to kind of correct when this uncertainty happens, but we have seen the markets go up, actually. And not only go up, they have really shot up. One of the reasons which is being given out is that the new president in US, if Joe Biden is the new president, he will not be able to reverse the policies of Trump administration, largely because the Senate control is still with the Republicans. So, but I don't think these are the real reasons. The real reason appears to be that there was a lot of money which was sitting on the sidelines ahead of the US elections. And as the US election event, the large event which was supposed to affect the markets, that is now behind us. A lot of this money which was on the sidelines, that has entered the market. And largely, we see the momentum stocks like technology stocks being bought, and which is driving the markets up. So it's pure liquidity-driven buying, which is driving the markets higher. Usually, I get worried when we see this kind of momentum in the markets. I continue to be cautious, but the truth is that the markets are going up. Not only in India, they are going up in USA, they are going up practically across the world. पुनीत, हम आपका ध्यान घरेलू बाजार की ओर लाना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि निफ्टी जो बैंकेक्स है वो 3,000 प्लस यानी बढ़ चुका है। बैंकेक्स के बढ़ने के यानी मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? बैंकों के प्रति जो ये आकर्षण जगह है, किन परिस्थितियों में और किन तथ्यों को ध्यान में रखकर लोगों का रुझान बैंकों के प्रति बढ़ा है? मनोज जी, देखिए, जहां तक बैंकिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि ये जो हम राइज देख रहे हैं ये जस्टिफाइड है टू लार्ज एक्सटेंट। उसका कारण ये है कि जो इकोनॉमिक नंबर्स भारत में आ रहे हैं, यदि हम पीछे सितंबर के अक्टूबर के खास तौर से जो नंबर्स हमने देखे हैं, चाहे पीएमई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करें, या हम दूसरे जो डेटा आया है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कोर सेक्टर ग्रोथ, अगर ये देखें तो लगता यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में बहुत फास्ट पिकअप कर रही है। और यदि इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप करती है तो जो चिंताएं थी कि जी बैंकों को इसका असर पड़ेगा और बैंक्स के ऊपर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट उनकी बढ़ेंगी या उनकी ऑपरेशंस पे इफेक्ट होगा, वो चिंताएं कम हुई हैं। प्लस अगर आप देखें कि सितंबर क्वार्टर के जो नंबर्स आ रहे हैं बैंक से, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के तो अच्छे नंबर्स थे ही, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रैक्टिकली सभी बैंक्स ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिखाए हैं, अनाउंस करे हैं। और मुझे लगता है कि जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर या सस्टेनेबिलिटी को लेकर चिंताएं थी, वो कम हो रही है, एंड देयरफॉर देयर इज वैल्यू बेस्ड बाइंग इन बैंक्स। तो बैंकिंग में हम जो कैचअप हो रहा है, आई थिंक टू सम एक्सटेंट इज जस्टिफाइड। लेकिन अगर पूरे सप्ताह को देखें तो बैंकिंग वाज द बिगेस्ट गेनर एज अ सेक्टर इन दिस वीक, फॉलोड बाय निफ्टी मेटल इंडेक्स. It was followed by other basic industries indices. So clearly ऐसा लगता है कि जो निवेशक हैं उनको अर्थव्यवस्था में अब ज्यादा बेहतर कॉन्फिडेंस है. Well, Puneet, you mentioned about FII's interest. Now we are seeing the Nifty Bank also picking up. What do you have to make about mutual fund selling into the market? They were in some degree of trouble earlier with the net asset value coming down, especially with the lockdown and the pandemic fears that dropped the stone in the market. Are you seeing their selling interest right now to really compensate mutual fund unit holders right now? So, mutual fund industry has gone through a very interesting cycle during this lockdown. In the initial phase, when actually there was a lockdown on the economy and the expectations were that people will panic and sell, we saw very large inflows into mutual fund industry and we saw mutual funds buying stocks. However, in the latter half, that is post-August,
So August, September and October, we have seen actually large number of redemptions come into the market, and investors have sold their mutual fund units and taken money off the table, while FIIs have done the reverse. In fact, they sold in the first half and then they've been buying later on. So I think investors have acted in a very savvy manner. They bought when stocks were cheap, and they have sold when stocks went up to book profits. But my own belief is that after this initial rush of buying and selling, flows into the mutual fund industry will stabilize. We will see the SIPs, the systematic investment plan investments coming in gradually. And I think the flows should stabilize now once the profit booking has happened. And we should see the mutual fund industry become a steady buyer beginning this month or maybe next month. And then I think it should smoothen out. Well, Puneet, we are heading for a short break, so please stay tuned. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Such good, so much good. Invest is good. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 19 पैसे मजबूत हुआ, 74 रुपए 20 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.23% कमजोर होकर 92.32 पर अंतर्दिवसीय कारोबार में आ गया। पुनीत, एक बार फिर से घरेलू बाजार की ओर हम अपनी चर्चा को ले चलना चाहेंगे और समझना चाहेंगे जो कोविड के नए आंकड़े देश की राजधानी दिल्ली में भी, उसके अलावा देश में भी आ रहे हैं, यानी कोविड का एक दूसरा लहर हम देख रहे हैं। दूसरी ओर जो हमारे आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वह अपेक्षाकृत बेहतर आ रहे हैं। कंपनियों के जो परिणाम आए हैं वो भी उम्मीद से कहीं बेहतर आए हैं। PMI के जो आंकड़े आए हैं वो भी उम्मीद जगाने वाला आया है। ऐसे में जो अर्थव्यवस्था की वापसी होनी है उसे आप किन अर्थों में ले रहे हैं? कुछ विशेषज्ञ पहले कहते थे कि V शेप की रिकवरी होगी, कुछ कहते थे W शेप की रिकवरी हम देख पाएंगे। अभी जो हालात हैं उसमें जो रिकवरी है मार्केट का, अर्थव्यवस्था का, वो क्या दर्शा रहा? मनोज जी, जैसे आपने कहा कि मार्केट की अर्थव्यवस्था जो है उसमें हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा सुधार आ रहा है। अब सवाल ये है हमारे सामने कि क्या ये जो अगर कोविड के आंकड़े बढ़ते हैं तो क्या ये अर्थव्यवस्था की जो सुधार है वो कम होगा और जिससे हम वापस एक बारी अर्थव्यवस्था में गिरावट देखकर फिर उसमें शायद उम्मीद होगी कि वो बेहतर आए, यानी W शेप्ड रिकवरी हो, या ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो आंकड़े हैं वो बेहतर होते रहें और हम देखें कि अर्थव्यवस्था जो है वो आगे बढ़ती रहे। हालांकि इस दौरान हो सकता है कि कोविड के केसेस जो है उनमें हम बढ़ोतरी देखें। मेरा अपना मानना यह है कि आने वाले समय में हम V शेप्ड रिकवरी देखेंगे, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक जो ओपनिंग है, रीओपनिंग हुई है, वो अब उसको रोल बैक करना बहुत मुश्किल है। और जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो अगर आप देखें बाजारों में तो पूरी तरह से वो वापस अर्थव्यवस्था में आ गए हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से लॉकडाउन दोबारा से हो सकता है या कोई बहुत बड़ा स्लो डाउन यहाँ से हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो आगे बढ़ेगी। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में चाहे 2 या 3 महीने के अंदर हम कोविड की वैक्सीन जिसकी उम्मीद है, भारत में भी हमें उम्मीद है और बाहर के देश है जो वहां से भी वैक्सीन आने की उम्मीद है, उससे भी एक मूड जो है, सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है और एक जो फियर है कोविड-19 का उसमें कमी है। तो आने वाले समय में यहाँ से स्थिति बेहतर होने के चांसेस ज्यादा हैं इसके बजाय कि यहाँ से स्थिति खराब हो। तो कुल मिलाकर मेरा अनुमान ये है कि जो अर्थव्यवस्था की जो सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-6 महीने में शायद हम प्री कोविड लेवल्स की जो एक्टिविटी GDP की थी या इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो हम शायद वापस देखेंगे। Puneet, you've also seen that the currency market, whenever the rupee trades against the dollar, there is arbitrage with the precious metals market, gold and silver, and both the precious metals have surged, silver more
than gold in terms of percentage and in aggregate terms as well. And also linking the currency market is a demand for dollars when it comes to the import of oil. Again, oil is range-bound. In fact, it's fallen by as much as 10% from the earlier range-bound levels. So, do you see the rupee strengthening today by 19 paise as a key indicator that the rupee will continue to strengthen, or this will reverse? The trend will reverse once the global economy picks up and there's a change in the presidency in the U.S. So, Arjun, you have raised 3-4 important issues in this question. First, of course, is how the commodity prices, particularly oil, gold, how are they going to behave vis-a-vis currencies of the world? And in that context, how the rupee is going to behave going forward. I think the centerpiece of this whole equation about commodities and currency is the dollar index. If you see dollar index, whenever it goes down, you will see that commodity prices go higher. So if dollar index is now 92 point something, then it is likely that gold and oil and other commodities will trend higher. Also, when dollar index falls, rupee and other currencies, they tend to appreciate. So that is how it is all built. Now, the dollar index is very intricately linked to the political stability in U.S. and about U.S. economy. So I think the current uncertainty, political uncertainty in U.S. has contributed to dollar coming down, and it is general expectation that if Democratic president comes to the White House, then we see the dollar becomes weaker because they tend to follow a policy which is more socialistic in a way, while Republicans are supposed to be more capitalistic. So a Democratic president is typically associated with weaker dollar. Now, weaker dollar means stronger rupee, and also weaker dollar means that a lot of investments flow out of USA and they flow into emerging markets. So that is probably one of the reasons why FIIs are buying in emerging markets, because they expect that a Democratic president will come to the White House and there will be a lot of dollar outflows from the US to other economies. So all these things are linked. So commodity prices become stronger when there's a Democratic president and the dollar goes down. And emerging markets gain because of the dollar outflows from the US. पुनीत, आपने उभरती हुई अर्थव्यवस्था की बात की। हम यहाँ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। कल प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को संबोधित करते हुए भारत में निवेश करने का आग्रह किया है और कहा कि यहाँ पर जो लगातार आर्थिक सुधार की प्रक्रिया चल रही है, कारोबार सुगमता की प्रक्रिया चल रही है, उसमें यदि वो अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो उनके लिए भारत एक मुफीद ठिकाना बन सकता है। किस हद तक और किन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि भारत उभरते हुए जो बाजार हैं उनमें निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है? मनोज जी, प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है बहुत ही मौके पर ये एक पिच करा है कि जो निवेशक जो अभी तक जो काफी बड़े पैमाने पर चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एंड देयर इज अ प्रिंसिपल चाइना +1, यानी चाइना के साथ साथ कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई चेन भी होनी चाहिए। तो वो भारत के लिए एक नया मौका बना है अब कि वो मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, ना हमारी बहुत ज्यादा कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, तो एक मौका हो सकता है भारत के लिए कि भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जगह बना पाए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ बड़ी कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां भी भारत में आ रही हैं। जापान इनकरेज कर रहा है कि इंडिया में बड़ी कंपनीज जो है सप्लाई चेन अपनी क्रिएट करें। तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया जो है उसमें चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे वाइट गुड्स की बात हो, इवन गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, इन सभी एरियाज में काफी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है भारत के लिए कि वो अपनी जगह बनाए। Well, Puneet, we're once again heading for a short break, so please stay tuned. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
Welcome back to Market Mantra. We're discussing about market performance with our expert, Shri Puneet Jain. Puneet, once again, welcome back to Market Mantra. We're discussing about how the index has been performing, Sensex and Nifty, which went up substantially today. The other sectors that we haven't discussed is energy and realty. Again, both going up by 1%. What were the reasons? So, energy, of course, is divided among oil producers, oil refiners, and many other related ancillary industries. Particularly, we have seen that the oil refining companies, BPCL, HPCL, and IOC, they have done very well. They seem to have done very well in terms of refining margins. They have done very well in profitability. In fact, some of these companies have come out with buybacks, like Hindustan Petroleum. So, for investors, these companies appear to be in a very good cash position, and they're distributing that cash either in the form of dividends or in the form of buybacks back to the investors. I think that is really driving the sentiment as far as energy and oil shares are concerned. Realty sector, of course, the anecdotal data we are getting is that realty sales have picked up very well in the last 2-3 months. And the realty sector companies are doing much better than what many expected them to do. So my own guess is the valuations are so cheap that there is value-based buying in realty sector. पुनीत, यदि हम बाजार को यानी आंखें तो फिर से जहां कह लें कि जो हाल की गिरावट हुई है कोविड से पहले की उस उच्चतम स्तर के निकट बाजार के आंकड़े पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो हमारे छोटे निवेशक हैं, आम निवेशक हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे उच्चतम स्तर पर पहुंचने के जब करीब है बाजार, उन्हें किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए और कैसे मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए मनोज जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अब हम दोबारा से जो जनवरी के पीक थे स्टॉक मार्केट के, हम उसके आसपास पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो पीक्स है इसमें कुछ चुनिंदा शेयर्स ही ज्यादा बढ़े हैं और काफी ऐसे स्टॉक्स अभी भी हैं जो नीचे के लेवल पर, नीचे के स्तर पर अवेलेबल हैं और बहुत अट्रैक्टिवली वैल्यूड हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे निवेशकों के लिए अभी काफी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की। लेकिन अगर वो एक्सपर्ट नहीं है खुद कंपनी स्टडी करके और स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बेहतर यही है कि वो म्यूचुअल फंड्स में जाएं। और म्यूचुअल फंड्स में खासतौर से जो मिड कैप फंड्स हैं, बिकॉज हमने देखा है कि जब भी मार्केट्स में तेजी आती है तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो फंड्स हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं। तो एक ये उनके पास एक विकल्प हो सकता है, अल्टरनेटिव हो सकता है कि वो कुछ पैसा वो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाएं, या जैसे हम मल्टी कैप फंड्स कहते हैं, तो मल्टी कैप फंड्स में यदि पैसा लगाएं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले शायद 1 या 2 वर्ष स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छे रहने चाहिए। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है और कारोबार सीमित दायरे में होता हुआ नजर आया है। एक और निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हिंग सेंग दोनों 0.1% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं दूसरी ओर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों 0.4% नीचे आ गए। यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक नरमी का रुख बना हुआ था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% नीचे चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 0.8% और जर्मनी का DAX 0.9% नीचे कारोबार कर रहे थे। Wall Street's main indices jumped yesterday as investors bet on a Republican-held Senate that would block any moves by a Joe Biden administration to tighten regulation and raise taxes on corporate America, even as the presidential election remained too close to call. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both climbed 2%, while the Nasdaq Composite Index surged 2.6%. Puneet, we had briefly discussed about the political situation in the U.S. right now and what's happening in the U.S. Congress and what the possible impact on the flow of money from the U.S. to emerging markets would be. But the question is that they're also carrying out open market operations where treasury bills, notes and bonds are sold. What is the demand for them and what's the impact really on the U.S. dollar? Because it's linked to a variety of other commodities like gold and silver along with oil.
So, Arjun, like we said earlier, because US Fed is increasing its balance sheet and expanding the supply of dollars, we have seen the dollar become somewhat weaker. So we have seen the dollar index coming down, which in turn has given some strength to gold and to other commodities. Oil actually hasn't gone up that much, but other commodities have gone up a lot. So clearly, I think these policies and the Fed policies are very closely linked with how commodity prices will behave. For the time being, I would say that going forward, the dollar is likely to remain weak, and which will then encourage flows from the dollar to commodities and emerging markets. And that is how we're seeing this whole thing play out. We've seen commodity prices go up and emerging markets see a lot of FII inflows. I think that trend will continue for at least some time before the dollar begins to inch up. So do you feel that the indices in the US stock market will come down if it's not a Republican-led government but a Democratic-led government? See, that is the belief that a lot of people have, that in case there is a Biden presidency, then the indices could come down because of his economic policies. But so far the market has shown, and that's the way the markets behave, they've shown that this expectation is not correct, and they seem to be celebrating either Biden or Trump presidency, either of them. Well, let's have a look at the oil market now. Oil today fell below $40 a barrel as new lockdowns in Europe to halt surging COVID-19 infections sparked concern about the outlook for demand, while markets remain on edge amid vote counting in the US election. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $39.80 a barrel, while WTI crude prices were around $37.60 per barrel. Very briefly, what's your take on the oil market, which has actually fallen by 10% despite remaining range-bound earlier and with this new COVID crisis in Europe? Briefly. So technically, like I said, if dollar goes down, oil prices should have gone higher. But if you look at the fundamentals, there's demand supply. I think there's too much supply of oil in the market, and it will prevent oil from going higher. So my expectation has been that oil will remain range bound in $35 to $40 range for quite some time to come. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक तेज रही। सोने का मूल्य 791 रुपए बढ़कर 51,717 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 2,147 रुपए उछलकर 64,578 रुपए प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत हुआ, $1,955 प्रति आउंस हो गया। चांदी भी थोड़ी सी मजबूत होकर $25.85 प्रति आउंस के स्तर पर पहुंच गई। और यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And before we close, a reminder of the headlines. Equity benchmarks continue their winning rally amid mixed global cues. Sensex closes at 41,893. Nifty settled at 12,264. Rupee appreciates 19 paise against the US dollar. And gold surges 791 rupees per 10 grams in the Delhi bullion market. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.